Assalamu alaikum students, hopefully all of you are going well. So the topics that we are going to discuss in today's class are inequalities involving one variable. So before starting this topic, first let's have a look at the sign of inequalities. What do we actually mean by equalities और उसके sign कैसे होते हैं? देखें, there are mainly these four signs of inequality that you used to deal with: greater than, lesser than, greater than equals to, lesser than equals to. All of the following four signs will be used in any of the situation associated to inequality. So to discuss this case in detail, let's have a look at couple of the cases. So आपको ये बात डिटेल से क्लियर हो जाएगी. आई एम राइटिंग फ्यू ऑफ द केसेस दैट आर एसोसिएटेड इन इक्वालिटी एंड देन मैं उनकी नंबर लाइन ड्रॉ करूँगा सो दैट ऑल ऑफ यू विल बी क्लियर अबाउट दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. नंबर 1, x is greater than 2. Number 2, x lesser than 2. Number 3, x greater than equals to 2. Number 4, x lesser than equals to 2. Number 5, let's say x is equivalent to 2. Number 6, x is not equals to 2. And number 7, let's say x is greater than 2 but lesser than 3. I will be discussing and drawing the number line for all of the following cases, so all of you will be clear about all of the situation associated to inequality. Let me draw the number line first so that all of you will be clear. Let me just first draw all the lines, then I'm going to label them so that आपको सारी बातें पक्का clear हो जाएंगी. This one and the last is this one. चलें, let's start with the case number 1, that is x is greater than 2. If you are interested to draw the number line for the following case, that is x is greater than 2, it simply means that you are going to mark at 2, and if it is relates to x is greater than 2, so you are going to draw the circle right at 2 and move in a rightward direction. You aren't supposed to shade the following circle. Shade नहीं करेंगे. The reason is x is greater than 2 means कि whatever the value of x is greater than 2 means it could be 2.00134 any value, but greater than 2, it means this circle is unshaded because 2 is not included. This one, now moving toward the next one, x lesser than 2. X lesser than 2 simply means if I am drawing a number line for the following situation, it means I am going to draw the circle right at 2 and this circle will be unshaded and number line will be drawn like this. If I am drawing a number line for x greater than equals to 2, इसको ऐसे रीड करेंगे ना, x is greater than equals to 2. It means I am supposed to draw the number line right here and this circle must be shaded. The reason of shading is because in the following situation आपके पास the value of x is also greater and equals to 2. If you are dealing with the case when x is lesser than equals to 2, again for drawing a number line for the following situation, you are going to mark a circle right at 2 and move in a leftward direction. And obviously आप इस circle को shade कर रहे होंगे. The reason of shading is because the value of 2 is included. If you are solving a situation that is x is equals to 2, it means आपके पास x की value 2 ही होगी and this 2 is included. So obviously you are making a circle right at 2 and this circle must be shaded. If I'm dealing with the situation that x is not equals to 2, equals to के साइन को कट कर देंगे, that refers to x is not equals to 2. x is not equals to 2 simply means that x की value 2 नहीं होगी. 2 नहीं होगी तो क्या होगी? It could be any value, either greater than 2, either lesser than 2. So I am making a circle right at 2 and any value in rightward direction, any value in leftward direction, or obviously this circle will be unshaded. The reason of unshaded is because 2 is value नहीं होगी. Whenever you are dealing with any of the situation that is associated to these type of inequality, we call the following equality as common equality. Common equality means कि आपके पास दो inequality के sign होंगे. इस केस को अगर आप रीड करें, it simply means that the value of x is greater than 2 and lesser than 3. 2 और 3 के between आने वाली all the values are included in the following situation. अब भाई करते कैसे हैं? इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यू आर गोइंग टू मार्क बोथ द नंबर्स दैट आर गिवन इन द इक्वालिटी. 2 भी गिवन है, 3 भी गिवन है. आपने नंबर लाइन पे 2 मार्क कर दिया है, 3 मार्क कर दिया. नो मार्किंग ऑफ द नंबर इन बिटवीन 2 and 3 और नंबर्स बिफोर 2 और द नंबर्स दैट आर आफ्टर 3. आप सिंपली सर्कल ड्रॉ करेंगे. अब इन इक्वालिटी को नंबर लाइन कैसे प्लॉट करते हैं देखें. फर्स्ट you are supposed to
draw the inequality for the following situation, then you are supposed to draw the inequality for the following situation. अगर मैं कह रहा हूँ x is greater than 2, it simply means that you are supposed to draw the circle right at 2 and draw the number line in rightward direction. मतलब while drawing the inequality for the first situation, obviously you are just hiding the second one. आप second की बात नहीं कर रहे होंगे, okay? And when you are dealing with the last part of the inequality, so obviously you are not talking about the first part, उसको आपने एक तरह से hide कर दिया. So the second part relates to x is lesser than 3, so the inequality or the number line that you are going to draw for the following situation will be like this. आप इस तरह से ड्रॉ कर रहे होंगे x lesser than 3. The final shaded region will be the region that lies in between 2 and 3, so you are going to shade that particular region. Hopefully all of you are clear about all of the following situations of equality जो कि greater than, lesser than, greater than equals to, lesser than equals to, exactly equals to, not equals to और combined equality से related होंगी. Let me draw one more situation of combined equality so that all of you people will be clear. The situation is like this. For example, the value of x is greater than equals to 2 but lesser than 5. इसके लिए if I ask you to draw the number line, so you are supposed to draw the number line like this. ऐसे number line draw कर रहे होंगे. The two numbers, the ranges that are given right here is the number that lies between 2 and 5. So first of all I am marking right at 2. 2 पे मार्क करूँगा, 5 पे मार्क करूँगा. The value of x is greater than equals to 2. It simply means that I am drawing a circle right at 2 and draw the number line in rightward direction. And since आपके पास greater than के साथ साथ this condition also relate to x is greater than equals to 2, the first part of the inequality. So obviously this circle must be shaded. Agree? And if I am drawing the inequality for the last part of the inequality, and if I'm drawing the number line for the last part of the inequality, that is like this, lesser than 5. Lesser than 5 directly relates to this circle must be unshaded. Or finally, shaded region for the following situation will be the region that lies between both the lines. Hopefully I am clear up till here. So this is about how to draw the number line for any of the situation of inequalities that involving only one variable. Now we are going to solve the conditions or equations that are actually relates to the inequality. Solving inequality, solve the inequalities and draw the number line associated questions. Now let me write few of the questions so that all of you people will be clear. क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत सिंपल सी वर्ड में ऐसे देता है. क्वेश्चन इज लाइक दिस, ड्रॉ द नंबर लाइन, ड्रॉ द नंबर लाइन नहीं, एग्जामिनर विल गिव द सिचुएशन लाइक दिस कि सॉल्व द इनइक्वालिटी एंड ड्रॉ द नंबर लाइन. सॉल्व द इनइक्वालिटी एंड draw the number line. So first of all you are supposed to solve the inequality and then you are supposed to draw the number line. अब भाई ये काम कैसे करेंगे? Very simple. If you are interested to solve the inequality and later on you are supposed to draw the number line, ज़रा बात सीखते हैं. For example, question is like this. This is your part number 1. 2x negative का 1 greater than equals to 9. If you are interested to solve the following equality, all of the questions that are related to the an equation that is in the form of inequality, all of the rules for solving that equation are exactly same. You consider that inequality sign like as an equals to sign. Equals to sign की तरह डील कर रहे होते हैं. Negative term 1 shifted right there becomes a positive 1. Multiplication number with the variable shifts in division. सारे रूल सेम होते हैं. There is only one rule changing. अब वो one rule change क्या होता है? That I will discuss later on while solving the following question. So for solving the following situation हम करेंगे क्या? 2x negative 1 shifts right there becomes positive 1. That becomes 9 plus का 1. 9 plus 1 comes out to be 10. This is 2x. Finally 2x becomes x, 2 shifts and division, 10 by 2, that comes out to be 5. It simply shows that the value of x is greater than equals to 5. Up greater than equals to 5 means आपके पास this is your final answer. And if you are interested to draw the number line for the following situation, तो number line कैसे draw करेंगे? Drawing a number line is not a big task. Simply
You mark 5 right here since it shows that the value of x is greater than equals to 5. So again you draw the number line that directed towards right hand side and shading the following circle. Why shading? Because this sign is of greater than as well as equals to 2. So hopefully all of you are clear about the following situation. Now moving towards couple of more questions. For say question is like this. 3x minus 1 divided by, let's say, 5 greater than equals to 2. In the following situation, if you are solving, this 5 is in division, has to be shifted into multiplication. Multiply में shift कर देंगे, this will look like this. 3x minus 1 greater than equals to 2 into 5. Agree? 2 into 5 on simplification comes out to be 10. Negative 1 shift right there becomes positive 1, that is equivalent to 3x. 10 added with 1 results in 11. When divided by 3 comes out to be 11 by 3. Normally these type of questions comes in paper 1, not in paper 2. तो भाई पेपर 1 में आ रहे हैं, so calculator is not allowed to you. So there is no need for dividing the following numbers and converting the following numbers into a decimal value. ज़रूरत ही नहीं है. डेसिमल नंबर्स में आपको इन नंबर्स को कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ड्रॉ द नंबर लाइन, हाउ आर you going to draw the number line? Simply just draw the line. Label whatever number comes out to be. If this is 11 by 3, write it 11 by 3. No problem at all. आप simply 11 by 3 ही mark कर देंगे. Draw the circle right here. Since the number is greater than 11 by 3, so that relates to rightward side. Move showing the arrow towards right hand side and shade the following circle. तो ये 11 by 3 से greater value आ जाएगी. Agree? Am I clear? Now moving towards one more question like this. If any of the situation is like this, 2x minus 1 divided by 5 divided by 3 lesser than 7, what are you supposed to do? You are supposed to solve the following equality. 3 is in division, has to be shifted into multiplication. Agree? 7 multiply by 3, this is 2x minus 5. 7 into 3 comes out to be 21. 2x minus 5. Minus 5 by the very next step has to be shifted on right hand side, becomes 21 added with 5, and here you are having 2x. Finally this is 2x, this is 21 added with 5 results in 26. 2 shifted in division comes out to be 26 divided by 2, that comes out to be the value of x, and after simplification the value of x will be 13. इसी बात को नंबर लाइन से शो करेंगे. सो नंबर लाइन इन द फॉलोइंग सिचुएशन will be drawn somewhat like this. You are marking 13 right here, drawing a circle. Since the value of x is lesser than 13 shows that you have to show the arrow towards left hand side, and this circle has to be unshaded circle because value lesser है. Hopefully all of you are clear up till here. So all of the following situation of inequality are related to simple equalities that are starting from here up till here. अब जो मैं क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, द सिचुएशन दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ आर रिलेट टू द फॉलोइंग सिचुएशन जिनमें कंबाइंड इनइक्वालिटी होती है. सो कंबाइंड इक्वालिटी को हाउ आर यू गोइंग टू सॉल्व? नाउ लेट्स डिस्कस कपल ऑफ क्वेश्चन दैट आर रिलेटेड टू कंबाइंड इक्वालिटी. देन वी विल ऑल्सो डिस्कस वन रूल चेंज. मैंने स्टार्ट में आपसे कहा कि ऑल ऑफ द सिचुएशंस ऑफ इनइक्वालिटी आर सॉल्व एग्जैक्टली द सेम मैनर एज यू यूज टू सॉल्व इक्वल्स टू साइन. सो what is one rule change वो भी फिर later on after discussing couple of cases of combined equality discuss करते हैं. Now examiner will give you a simple situation, solve for x. How are you going to solve? Examiner तो ये कहेगा कि भाई x की value calculate कर लो. For example situation is like this, 2x, here you are having -8, here you are having 10. Examiner is asking you to find the value of x and draw the number line. While solving any of the situation in which you are having two sign of equalities, this is the first part and this is the second part. First of all, you have to break the following condition like this, writing the first part, ignoring this one, then writing the second part and ignoring the first part. कहना क्या चाह रहा हूँ, इस बात को first of all आप ऐसे लिख देंगे, this is -8 and here you are having 2x, then this is 2x and here this is lesser than 10. फर्स्ट पार्ट ऑफ द इनइक्वालिटी लिख रहे हैं, ऑब्वियसली यू आर नॉट कंसिडरिंग द लास्ट पार्ट. लास्ट पार्ट ऑफ द इनइक्वालिटी लिख रहे हैं, यू आर नॉट कंसिडरिंग द फर्स्ट पार्ट. तो फाइनली दिस -8 इज गोइंग टू डिवाइडेड बाय 2. दिस कम्स आउट टू बी द वैल्यू ऑफ x.
So the value of x is greater than negative 4. This comes out to be the value of x. And while solving the following part, this is simply the value of x will be 10 divided by 2. 10 divided by 2 results in 5. So value of x is lesser than 5. After solving this complete situation, you have to now write the answer in terms of combined equality. इस part को अगर आप read करें, the value of x is greater than negative 4. If you read the following part, the value of x is lesser than 5. If you combine the following part, so you are going to write it like this: x is greater than negative 4, however lesser than 5. This is the final answer for the following situation, the value of x. Now if I ask you to draw the number line, the number line draw करना is not a big task. You have just drawn the line. Write the first part, write the second part. First part is negative 4, second part is 5. There is no need of writing the numbers before negative 4, filling the numbers in between and writing the numbers after 5. आप directly लिख रहे होते हैं. Since the following situation relates to the value of x is greater than negative 4, drawing a circle right at negative 4 and draw the number line. This will be like this. Now x is lesser than 5, drawing a circle right at 5 and drawing this line leftward. So this is the situation जो आपने draw कर दी. Now the final shading in the following situation will be the region that lies or that satisfies the following situation. That is the following one. You are supposed to shade the region that lies between negative 4 and 5. तो फाइनल सिचुएशन में आपके पास ये आंसर हो जाएगा, दैट इज नेगेटिव 4 एंड 5. होपफुली आई एम क्लियर अप टिल हेयर. नाउ सॉल्विंग 2 to 3 more questions of combined equality, so your conceptual perspective will be clear. In the following situation, अगर मैं question लिखूँ, the next question is let's say like this. Here you are having negative 4, here you are having sign of inequality. 2x minus 1, let's say divided by 3, here you are having equals to sign, and this is let's say 5. अब इसी situation को अगर मैं solve करूँ, so this will be like this: writing the first part, then writing the second part individually. Individually लिखोगे तो कैसे लिखोगे? You will be writing it like this: negative 4, sign of equality, 2x minus 1 divided by 3. Then 2x minus 1 divided by 3 lesser than equals to 5. This 3 is in division. First इस part को solve कर लें, then later on you are supposed to solve the following part, and there is a line in between. If this 3 shifts right there, becomes negative 4 multiplied by 3. This is the sign of equality, 2x minus 1. Negative 4 into 3 comes out to be negative 12. This is 2x minus का 1. Negative 1 shifts right there, becomes positive 1. Negative 12 added with 1. Here you are having 2x. This comes out to be negative 11. And here you are having 2x. Then 2 has to be shifted into division. Negative 11 divided by 2. This comes out to be the value of x. The first value of x comes out to be this one. Now I am solving the remaining second part of the inequality, that is this one. 3 is in division, has to be shifted into multiplication. This is 2x minus ka 1. 5 multiplied by 3. 5 into 3 comes out to be 15. This one shifts right there, becomes positive 1. This is 2x. 5 plus 1 comes out to be 16. This is 2x. The value of x comes out to be 16 divided by, not equals to sign, sorry, 16 divided by 2, and the value of x comes out to be lesser than 8. अच्छा, मैंने एक माइनर सी मिस्टेक ये करी है. माइनर सी मिस्टेक वॉज दिस कि हेयर वी आर हैविंग इनइक्वालिटी दैट इज़ विथ इक्वल्स टू साइन, और ये सिर्फ इनइक्वालिटी थी विदाउट इक्वल्स टू साइन. सो ये एज इट इज़ कॉपी हुई. दिस इज़ lesser than equals to 2, lesser than equals to 2. Then I just forgot to write this equals to sign right with the inequalities, so I'm writing those equals to sign, equals to sign, equals to sign, equals to sign, equals to sign. So final answer will be the combined equality. That's the combination of the answer of this one and this one. Again बात यही सुनोगे, there is no need of writing the following value into decimal. You will just write it as it is. कंबाइन इक्वालिटी में कैसे कन्वर्ट करोगे? इन द फॉलोइंग सिचुएशन आंसर इज लाइक द वैल्यू ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन नेगेटिव 11 by 2, हाउएवर लेसर देन इक्वल्स टू 8. तो यू आर गोइंग टू राइट द फॉलोइंग थिंग लाइक दिस: नेगेटिव 11 by 2, द वैल्यू ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एंड लेसर देन इक्वल्स टू 8. So this is the final answer or final solution for the following inequality. However, if examiner asks you to draw the number line, so number line will look somewhat like this.
ऐसी कुछ होगी. नंबर लाइन क्लियर स्पेस में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ. You are supposed to write first the number that is -11 divided by 2, and here you are going to write the number that is 8. Finally -11 by 2 से greater है, shifting rightward. 8 से lesser है, shifting leftward. Shifting leftward. The final region will be the shaded region that satisfy both the inequality. That will be this shaded region that satisfying both the situation. And important thing, here you are having equals to sign, so this circle of the following situation must be solid circle, must be shaded. Start से लेके end तक देख लीजिए. So hopefully all of you guys will be clear. Now we are going to solve the situation. What is that one rule change जिसकी मैं start से बात कर रहा हूँ कि inequality के केस को solve करते हुए एक rule की क्या changes होती है. Now let's move towards that change. Let's move towards that change. देखिए, it's very simple. Let me write the wording. Let me write the wording of that particular rule कि wording क्या होती है and what is that one wording change and one rule changes in that particular situation. Let me write the wording. It simply says that while solving inequality, whenever you are having negative sign with the variable whose value is to be determined, then you flip the sign of inequality. मैं चाहता हूँ इस वर्डिंग को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरा एक दफ़ा रीड कर लीजिए. इट सिंपली सेज दैट while solving inequality, whenever you are having a negative sign with the variable whose value is to be determined, then you flip the sign inequality. इसका सिंपली मतलब क्या है कि भाई जिस वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो इनइक्वालिटी सॉल्व करते हुए, अगर आपके पास नेगेटिव साइन होगा तो यू आर सपोज टू फ्लिप द साइन ऑफ इनइक्वालिटी का साइन अकॉर्डिंगली आप लोग फ्लिप कर देंगे. अब मैं इस सिचुएशन को बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लेन करता हूँ, बट बिफोर एक्सप्लेनिंग मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ, एक अपार्ट फ्रॉम एक एग्जांपल समझा दूँ. मान लें वी हैव सॉल्व फॉर एनी ऑफ द सिचुएशन, और आफ्टर सॉल्विंग जैसे ऐसा कुछ केस लिखा था, एग्जांपल बता रहा हूँ आपको. फॉर से लिखा हुआ है 2 माइनस का 2x इज इक्वल्स टू लेट से 3x लाइक दिस, बल्कि इसको प्लस कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस सिचुएशन को सॉल्व करें तो दिस विल बी 3x माइनस का 2x, एंड फाइनली 2 इज लेफ्ट ओवर राइट हेयर, तो 3x माइनस 2x कर लेंगे. दिस कम्स आउट टू बी x की वैल्यू कम्स आउट टू बी 2. इस x की वैल्यू कम्स आउट टू बी 2 को आई कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, बिकॉज मैथ्स का रूल यही कहता ना, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर सपोज टू राइट द वेरिएबल, देन यू आर सपोज टू राइट द नंबर. मतलब आप इस चीज़ को ऐसे आंसर कर रहे होगे, राइटिंग द वेरिएबल फर्स्ट, राइटिंग द नंबर सेकेंड. एग्जैक्टली इन द सेम वे समझाना क्या चाह रहा हूँ, सेम वे समझाना ही चाह रहा हूँ. मान लो आपके पास ऐसे कुछ लिखा हुआ है x इज़ ग्रेटर देन 2. इस बात को रीड कैसे करोगे? द वैल्यू ऑफ x इज़ ग्रेटर देन 2 या 2 इज़ लेसर देन x. ऑब्वियसली हम वेरिएबल की टर्म में बात कर रहे होते हैं. सो इफ़ आई राइट द फॉलोइंग सिचुएशन लाइक दिस, जैसे वेरिएबल को फर्स्ट लिखूंगा, नंबर को बाद में लिखूंगा. सिंस द माउथ ऑफ द इनइक्वालिटी इज लाइक ओपनिंग टूवर्ड्स x, दैट शोज दैट x इज़ ग्रेटर, सो ऑब्वियसली दैट नीड्स टू बी ओपन टूवर्ड्स x. अगर आप ऐसा करते हैं तो इस तरह लिखने का मतलब इनइक्वालिटी के साइन को फ्लिप करना हरगिज़ नहीं होता, बिकॉज फ्लिप करना मीन्स कि साइन अगर x की डायरेक्शन में है तो अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ x हो जाए. अगर आपने इसको इस तरह से लिखा और ऐसे कन्वर्ट कर दिया, इसको हम फ्लिप करना हरगिज़ नहीं कहते. मैंने यहाँ पे टर्म यूज़ करी थी फ्लिप द साइन. फ्लिप का मतलब ये होगा कि अगर डायरेक्शन ऑफ द साइन टूवर्ड्स दिस है तो वो इस तरफ हो जाए. दैट सिंपली रिलेट्स टू फ्लिपिंग द साइन. इसका मतलब फ्लिप होगा, लेकिन इस सिचुएशन को वी वोंट कंसिडर एज फ्लिपिंग बिकॉज मीनिंग ऑफ द सिचुएशन इज सेम. इसको फ्लिप करना नहीं कहेंगे. चलें इस सेंटेंस के अकॉर्डिंगली बात करते हैं. while solving inequality whenever you are having negative sign with the variable whose value is to be determined, then you flip the sign of equality.
अब इस बात को समझाने के लिए लेट्स हैव अ वेरी वेरी बेसिक एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आपके पास इस तरह से कुछ लिखा हुआ है माइनस का 2x एंड हेयर दैट इज़ ग्रेटर देन 8. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ऐसा कुछ लिखा हुआ है -3x नेगेटिव का 1 हेयर यू आर हैविंग लेट्स से माइनस का 6 नहीं सॉरी -7 मान लें -7 है. इफ़ यू आर सॉल्विंग द फॉलोइंग केस, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सिंस यू आर हैविंग अ नेगेटिव साइन विद द वेरिएबल, और नेगेटिव साइन विद द वेरिएबल हो, हमने रूल अभी डिस्कस करा, वाइल यू आर हैविंग अ नेगेटिव साइन विद द वेरिएबल हुज वैल्यू इज टू बी डिटर्मिन्ड, तो आप इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप कर देते हैं. फ्लिप करना सिंपली मीन्स दैट व्हेन दिस -2 वाला पार्ट इज शिफ्टेड इनटू डिनोमिनेटर, तो ये ऐसे कुछ लिखा जाएगा 8 divided by -2, x is as it is, the sign of inequality was towards x, और अभी हमने डिस्कस किया कि इसको फ्लिप कर दोगे, फ्लिप करना मतलब दैट वाज ग्रेटर नाउ कन्वर्टेड इनटू लेसर, तो वैल्यू ऑफ x विल बी लेसर देन -4. दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज फ्लिपिंग द साइन. और फ्लिपिंग का सीन तभी होगा कि जब नेगेटिव साइन विद द वेरिएबल हो जिसकी वैल्यू आप कर रहे हो कैलकुलेट. चलें इसी बात को दोबारा इस क्वेश्चन से समझते हैं. दिस इज -1 साइन शिफ्टेड देयर बिकम्स +1. सो फाइनली दिस विल बी -7, दिस इज +1, दिस इज -3x एंड दिस इज ग्रेटर देन साइन. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन -6 हो गया, -3x हो गया एंड साइन एज इट इज है. बात ये समझो, इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हो, वेरिएबल के साथ नेगेटिव साइन है, जब ये उधर शिफ्ट होगा ऑन द राइट हैंड साइड एंड यू आर मेकिंग द वेरिएबल एक्स सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला सिंस यू आर हैविंग अ नेगेटिव साइन विद द वेरिएबल, तो वाइल सॉल्विंग इनइक्वालिटी यू आर सपोज टू फ्लिप द साइन. तो -6 व्हेन गोइंग टू डिवाइडेड बाय -3, दिस ग्रेटर देन साइन हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू लेसर देन, ऐसा हो जाएगा. सो फाइनली आफ्टर सिंप्लीफिकेशन this will be 2 and x is lesser than 2. Getting my point? Yes or no? So hopefully after been through the following two cases, आपको introduction of the following property तो clear हो गया होगा. Let's discuss a detailed question for the following situation. Properly detailed question इस situation के लिए discuss करते हैं so that all of you will be clear. Let's say question is like this. This is 2x minus का 3 sign of equality. You are having negative का 11 negative added with 4, for example 4. If you are interested to find the value of x for the following situation, आप करोगे क्या? You are supposed to shift -3 right here and 4 right at that particular position. It means that this is 2x, this is +4. +4 when shifted onto left hand side becomes -4x. Here you are having a sign of equality, -11 added with 3. इसको simplify कर लोगे, that always result in obviously -8. You are having -2x. Up now you are solving an equality and you are having a negative sign with the variable whose value is to be determined. और जब भी negative sign with the variable होगा, you are shifting that variable and making the variable subject of the formula. You are shifting the number right in the denominator on the right hand side and making the variable subject of the formula. So obviously you are supposed to flip the sign of inequality. -8 going to divided by -2, and while doing this task this lesser than sign has to be converted into greater than sign. So obviously negative cancel, the value of x is greater than 4. This is your final answer for the following situation. और obviously यार नंबर लाइन ड्रॉ करोगे तो नंबर लाइन ड्रॉ करना इज नॉट अ बिग टास्क. इस तरह से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं. नंबर वेरिएबल के साथ नेगेटिव साइन है तो ऑब्वियसली यू हैव टू सॉल्व इट लाइक दिस. लेट मी सॉल्व वन मोर क्वेश्चन, देन मैं आपको एक बात और रिलेट कराऊंगा. लेट मी सॉल्व वन मोर क्वेश्चन, देन आई विल रिलेट यू वन मोर थिंग. द क्वेश्चन इज लाइक दिस. दिस इज लेट्स से 3x माइनस का 7. हेयर यू आर हैविंग लेसर देन इक्वल्स टू साइन. हेयर यू आर हैविंग -7x. हेयर यू आर हैविंग लेट्स से 5. इस तरह से आपके पास कोई सिचुएशन गिवन है. In the following situation, if you are solving it, अच्छा let's make it +7, not negative. Let's make it +7. Situation ये. अच्छा अब इसको अगर आप अकॉर्डिंगली सॉल्व कर रहे होंगे
and you are doing the simplification. So obviously you have to shift this 7 right here and negative 7 right there. This will be 3x minus ka 7x. You are having equals to an equality sign as it is 5 added with 7. When you add 5 with 7, that results in 12, and this is negative 4x. Finally, after simplification, आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होंगे, and x in the following situation will come after shifting this negative 4 into division. लेकिन भाई डायरेक्टली थोड़ी शिफ्ट होगा, मसला है. The problem is whenever you are having negative sign with the variable whose value is to be determined, so obviously this sign of inequality needs to be flipped. इसको flip करना पड़ेगा. जो lesser than equals to है, that has to be converted into greater than equals to 12 divided by negative 4, and this will be like this, becomes greater than equals to. और अगर आप simplify कर लेंगे तो that comes out to be negative 3. Yes or no? अब finally if you are interested to draw the number line for the following situation, तो number line draw करना not a big task. आप number line draw कर लेंगे. Let's have a look at the following two situation. Then मैं आपको एक बात और सिखाऊं. Then we will be ending our today's session. While solving these type of situation, इनइक्वालिटी के सारे रूल सेम हैं और एक ही रूल चेंज होता है कि नेगेटिव साइन विद द वेरिएबल आए तो साइन ऑफ इक्वालिटी फ्लिप करते हैं. ऐसा हमने स्टार्ट में सीखा. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यूज्ड टू बी कंफ्यूज्ड अबाउट द फॉलोइंग सिचुएशन. उनको लग रहा होता है पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, क्या चीज़ हो रही है, इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप क्यों कर रहा है, नॉर्मल तरीके से सॉल्व तो कर सकते हैं. भाई देखिए रूल है, रूल इज सिंपली नेगेटिव साइन विद द वेरिएबल होगा, इनइक्वालिटी का साइन लाजमी फ्लिप होगा. अब इन दी सिचुएशन यूजुअली स्टूडेंट से वन थिंग, सर व्हाट इफ अगर नेगेटिव साइन हो ही ना, अगर आप वेरिएबल के साथ नेगेटिव साइन आता है, जैसे इन द फॉलोइंग क्वेश्चन वी गॉट द नेगेटिव साइन विद द वेरिएबल राइट एट द फॉलोइंग स्टेप. व्हाट इफ़ के अगर नेगेटिव साइन हो ही ना तो क्या करेंगे भाई, फ्लिप भी नहीं करेंगे. जैसे आई एम सॉल्विंग द सेम क्वेश्चन अगेन, आई एम राइटिंग द सेम क्वेश्चन राइट हेयर एंड सॉल्विंग इट अगेन. और मैं आपको एक बात नोट कराता हूँ. फॉर से द क्वेश्चन वॉज 2x नेगेटिव का 3, दिस इज साइन ऑफ इक्वालिटी, नेगेटिव 11 एडेड विद 4x. Negative 11 added with 4x. Few of the student play smart. They say कि सर नेगेटिव साइन तो आपके पास इस सिचुएशन में तब आता है जब आप 4x वाले पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हो. इफ़ यू शिफ्ट दिस 4x वाला पार्ट राइट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सो यू विल गेट द नेगेटिव साइन, एंड दिस नेगेटिव 3 वाला पार्ट राइट ऑन द राइट हैंड साइड. So what if we shift this 2x वाला part on the left hand side, so obviously we won't be getting negative sign with the variable. नंबर के साथ नेगेटिव साइन हो, वी डोंट बॉदर अबाउट दिस, वी आर ओनली बॉदर अबाउट अ नेगेटिव साइन विद द वेरिएबल. सो व्हाट इफ वी do such situation, if we solve the following equation in such a way कि we won't get any negative sign with the variable, so obviously sign of inequality flip करने का भी कोई सीन नहीं होगा. मतलब ये you are shifting 11 right there, 2x right there, आपको समझ में आ रहा है कि 2x को उधर शिफ्ट कर देंगे तो obviously you won't be getting negative sign with the variable. So this is negative 3, positive 11. After simplification this will be 8, sign of inequality, and then you are having 2x. अब इस बात को क्लियरली देख के बताओ क्या नेगेटिव साइन विद द वेरिएबल है? Yes or no? Not at all. If you are not having negative sign with the variable, so when this 2 shifted right into denominator, there won't be any silsila, any scene of changing the sign or flipping the sign of the inequality. So this will remain as it is, and the value of x will be greater than 4. If the value of x comes out to be greater than 4, मुझे एक बात ये बताओ, as we had discussed in the start, कि हम नॉर्मली जब भी इस तरह की सिचुएशन को सॉल्व करते हैं, वी इंश्योर दैट कि वेरिएबल हैज़ टू बी रिटन फर्स्ट देन नंबर. सो ऑब्वियसली इफ राइट द वेरिएबल फर्स्ट देन नंबर, सिंस द साइन ऑफ इक्वालिटी वॉज टूवर्ड्स द वेरिएबल एक्स, सो ऑब्वियसली मैं एक्स की तरफ ओपन कर दूंगा, एंड दिस कम्स आउट टू बी द वैल्यू ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन 4. होपफुली ऑल ऑफ यू आर क्लियर. एक बात गौर से देख लें, देयर वोंट बी एनी चेंजिंग इन द आंसर्स. आंसर मस्ट बी सेम. आंसर जो इस सिचुएशन के लिए होगा, जो इस केस के लिए होगा, आंसर मस्ट बी सेम. बस इसमें इनइक्वालिटी के साइन को फ्लिप नहीं करना पड़ा बिकॉज आपके पास वेरिएबल के साथ नेगेटिव साइन आया ही नहीं. एक बात क्लियरली दोबारा समझिएगा, आपने इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग से एज इट इज़ सॉल्व करा, एंड देन फॉर एग्जांपल आप इस स्टेप पे पहुंच गए, दैट इज़ दिस वन. आई एम राइटिंग दिस स्टेप राइट हेयर, दैट इज़ नेगेटिव 2x, साइन ऑफ इनइक्वालिटी negative 8. I am just copying the following step right there.
अगर आप इस स्टेप तक पहुंच गए, सो व्हाट इफ़ अगर आप अब ही नेगेटिव साइन रिमूव कर दें बाय शिफ्टिंग दैम 2x on the right hand side, 8 on the left hand side, so can we write it like this, yes or no? और अगर आप ऐसा लिख सकते हैं, so obviously if you shift 8 by 2 that comes out to be 4, तो भाई स्टार्ट में करो, बाद में करो, आप इनइक्वालिटी में नेगेटिव साइन आने ही ना दो, इनइक्वालिटी में नहीं, सॉरी इनइक्वालिटी में नहीं, विद द वेरिएबल नेगेटिव साइन आने ही ना दो. if you won't having any negative sign with the variable, तो at the end you will end up by getting the same answer. आपको फ्लिपिंग का केस नहीं समझ में आ रहा तो एक रूल याद कर लें, वेरिएबल के साथ नेगेटिव साइन ना आने दें. सो लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास, आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन अगेन एंड शोइंग यू कि हम वेरिएबल को नेगेटिव नहीं करेंगे, सो विल एंड अप बाय गेटिंग द सेम आंसर और हमें इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप भी नहीं करना पड़ेगा. सो टुडेज लास्ट क्वेश्चन will be this one, that is 3x negative 7 sign of inequality then 7x added with 5. अब फाइनली अगर इसको सिंपल करोगे तो सिंपल करने के लिए as you are aware of कि 7x when shifted on left hand side you will end up by getting a negative sign. So what if you shift this 3x on the left hand side, left hand side पे shift कर लो, this will be negative 7 negative 5 sign of inequality, this is 7x negative 3x, 7x negative 3x results in negative नहीं positive 4x, this will be negative 12. सिंपल कर लें, negative 12 when divided by 4 the value of x, there won't be any flipping of sign because negative sign is not with the variable, that is only with the numbers के negative sign we don't bother, variable के साथ negative sign नहीं होना चाहिए. So finally after simplification the value of x must be greater than equals to 3 and obviously you are supposed to write the variable first then number. सो x को पहले लिख दें, नंबर को बाद में लिख दें. सिंस द इनइक्वालिटी साइन इज टूवर्ड्स x, तो आपने टूवर्ड्स x ओपन करा, उसको क्लोज कर दिया. सो देयर वोंट बी एनी चेंजिंग इन द आंसर. होपफुली ऑल ऑफ यू गाइज आर क्लियर अबाउट द फॉलोइंग सिचुएशन. कीप द फॉलोइंग रूल इन माइंड, वैन एवर यू आर हैविंग नेगेटिव साइन विद द वेरिएबल हुज वैल्यूज टू बी डिटर्मिन्ड, तो इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप होता है. नंबर्स के साथ ऐसा कोई भी सिलसिला या सीन नहीं होता. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास. थैंक यू.